In the endless deserts beyond the city of Mariba, where golden dunes rise and fall like frozen waves, there stood an ancient ruin buried in time and whispers. मारीबा शहर के पार लामतनाही सहराओं में, जहां सुनहरी ठेले मंजमद लहरों की तरह उठते और गिरते हैं, एक कदीम खंडर वक्त और सरगोशियों में दफन खड़ा था. Few dared to travel there, for it was said the place was cursed, a remnant of an age when jinn walked freely among men. कम लोग वहां जाने की हिम्मत करते थे, क्योंकि कहा जाता था कि ये जगह मनहूस है, एक ऐसे दूर की बाकियात जब जिन इंसानों के दरमियान आजादाना घूमा करते थे. But one night, beneath a waning crescent moon, a boy named Yamin ventured into the dunes with a tattered map and a broken compass. लेकिन एक रात ढलते हुए हिलाल के नीचे यामीन नामी एक लड़का एक फटी हुई नक्शा और टूटे हुए कुतुबनुमा के साथ टहलों में दाखिल हुआ. He wasn't a thief nor a treasure hunter. वो ना चोर था ना खजाने का शिकारी. He was a healer's apprentice, searching for the Ashen Pearl, a mythical stone said to cure any disease. वो एक हकीम का शागिर्द था जो एशियन पर्ल की तलाश में था, एक दीवमालाई पत्थर जिसके बारे में कहा जाता था कि वो हर बीमारी का इलाज है. His mother lay dying, and no potion or prayer had saved her. उसकी माँ मरने के करीब थी और कोई दवा या दा उसे बचा ना सकी थी. Yamin's journey had been perilous. यामीन का सफ़र बहुत खतरनाक था. Scorpions stung him. बिच्छुओं ने इसे डंक मारे. Mirage led him astray. सराब ने इसे भटका दिया. Sandstorms battered his frail body. रेत के तूफानों ने इसके नाजुक जिस्म को चोर-चोर कर दिया. But his resolve was ironclad. लेकिन इसका अज़म फौलादी था. On the 7th night, the desert opened to reveal the ruins. Obsidian pillars scorched by ancient fire, and at the heart a mausoleum carved into the rock like a sleeping beast. 7वीं रात सहरा खला और खंडरात सामने आए. कदीम आग से जले हुए सयासतून और दरमियान में एक मुकबरा जो चट्टान में ऐसे तराशा गया जैसे कोई सूया हुआ दरंदा हो. Inside, the air was thick with dust and secrets. अंदर की हवा गर्द गुबार और राजों से भरी हुई थी. Strange symbols pulsed faintly on the walls, alive with a forgotten language. दीवारों पर अजीब अलामतें मुद्दम रोशनी में धड़क रही थीं, एक भूली हुई ज़बान के साथ जिंदा थीं. As Yamin stepped inside, the door closed behind him with a resounding thud. जैसे ही यामीन अंदर गया, दरवाज़ा धमाके से बंद हो गया. Shadows coiled, साए लपट गए. A deep voice echoed from the darkness. अंधेरे से गहरी आवाज़ गूंजी. Why have you disturbed my slumber? तुमने मेरी नींद क्यों खराब की? A towering jinn appeared, his form fading between fire and smoke. एक दिवाहकल जिन नमोदार हुआ, इसका जिस्म आग और धुएं के दरमियान मुधम हो रहा था. His eyes burned not with fury, but with wariness. इसकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि थकन जल रही थी. His name was Jar, and he had been bound for 1,000 years, cursed to sleep until someone came seeking the Ashen Pearl. इसका नाम जार था और वो 1000 सालों से बंधा हुआ था, लानती नींद में जब तक कोई एशियन पर्ल की तलाश में ना आ जाए. यामीन, trembling, explained his quest. यामीन ने कांपते हुए अपना मकसद बताया. Jar listened and then laughed, a sound like thunder rolling through the underworld. जार ने सुना और फिर हंसा, ऐसी आवाज़ जैसे जहन्नम में गरजता हुआ बादल. So it was not greed that woke me, but love. Very well, boy. The pearl lies in the chamber of whispers, but you must answer my riddles. Fail, and the desert will reclaim you. तू लालच ने नहीं, मोहब्बत ने मुझे जगाया. बहुत खूब लड़के मोती वस्त्रों के कमरे में हैं, लेकिन तुम्हें मेरी पहेलियों के जवाब देने होंगे. नाकाम हुए तो सहरा तुम्हें वापस ले जाएगा. The chamber lit with blue flame, and the first riddle came. कमरा नीली आग से रोशन हो गया और पहली पहेली आई. I speak without a mouth and hear without ears. I have no body, but I come alive with wind. What am I? मैं बगैर मना बोलता हूँ, बगैर कान सुनता हूँ. मेरा जिस्म नहीं मगर हुआ से जिंदा होता हूँ. मैं क्या हूँ? Yamin whispered an echo. यामीन ने सरगोशी की. गूंज. Zar nodded and a stone door creaked open. जार ने सर हिलाया
और एक पत्थर का दरवाजा चरचराते हुए खल गया. The second riddle followed. दूसरी पहेली आई. I can build castles or crumble them. I can blind a man or reveal his path. I am soft as silk and fierce as time. What am I? मैं कलह बना सकता हूँ या गिरा सकता हूँ. इंसान को अंधा या उसका रास्ता दिखा सकता हूँ. मैं रेशम की तरह नरम और वक्त की तरह सख्त हूँ. मैं क्या हूँ? Yamin paused, then smiled. Sand. Yamin रका, फिर मुस्कुराया. Reet, another door opened. एक और दरवाजा खुल गया. But before the third riddle could be spoken, Jar faltered. लेकिन तीसरी पहेली से पहले जार लड़खड़ा गया. The flames around him flickered. इसके इर्द-गिर्द की आग लर्जने लगी. He groaned, collapsing to one knee. वो खराहा और एक घुटने पर गिर गया. I am dying, boy, he gasped. The curse was never meant to end, only to rot me slowly. मैं मर रहा हूँ लड़के, इसने कराहते हुए कहा. ये लानत कभी खत्म होने के लिए नहीं थी, बल्कि मुझे आहिस्ता आहिस्ता गलाने के लिए थी. Yamin, without thinking, rushed to him and placed his hands on the jinn's chest. Let me help. Yamin ने सोचे बगैर इसकी तरफ दौड़कर अपने हाथ जिनके सीने पर रखे. मुझे मदद करने दो. A pulse of light surged through him. रोशनी की एक लहर इसके जिस्म से गुजरी. The ancient magic within Jar responded. जार के अंदर की कदीम जादुई ताकत ने जवाब दिया. In that moment, Yamin's compassion undid part of the curse. इसी लम्हे यामीन की हमदर्दी ने लानत का एक हिस्सा खत्म कर दिया. The jinn's form steadied, but he remained bound. जिन की शक्ल मुस्तहकम हो गई, लेकिन वो अब भी बंधा हुआ था. You have a healer's soul, Jar murmured. That is rarer than wisdom. तुम्हारे अंदर शफा देने वाली रूह है, जार ने आस्था से कहा. ये हुकमत से भी ज्यादा नायाब है. Moved by Yamin's purity, the jinn offered the final riddle not as a test but as a gift. यामीन की पाकीज़गी से मुतासिर होकर जिन ने आखिरी पहेली बतौर आजमाइश नहीं बल्कि बतौर तहफा पेश की. I am the treasure that grows when shared, the light that survives the darkest tomb. What am I? मैं वो खजाना हूँ जो बांटने से बढ़ता है, वो रोशनी जो सबसे तारीक कब्र में भी बाकी रहती है. मैं क्या हूँ? Yamin answered without hesitation. Hope. यामीन ने बगैर झिझक के जवाब दिया. उम्मीद. The chamber opened. कमरा खुल गया. There, on a pedestal carved from moonstone, lay the ashen pearl, glowing like a quiet star. वहाँ चांदी के पत्थर से बने चबूतरे पर ईशन पेरल चमक रहा था जैसे कोई खामोश सितारा हो. Yamin took it, bowing deeply to the jinn. यामीन ने इसे उठाया और जिन को गहरा झुककर सलाम किया. Jar smiled, his flames now calm. Take it, healer, and know this. True power is not in what you wield, but what you are willing to give. जार मुस्कुराया. इसकी आग अब पर सुकून थी. ले लो, शफा देने वाले, और ये जान लो, असल ताकत इसमें नहीं जो तुम रखते हो, बल्कि इसमें है जो तुम देने के लिए तैयार हो. When Yamin returned to Mariba, the pearl saved his mother. जब यामीन मारिबा वापस आया, तो मोती ने इसकी माँ को बचा लिया. Word spread of his journey, but he never spoke of the jinn or the riddles. इसके सफ़र की कहानी फैल गई, लेकिन इसने कभी जिन या पहेलियों का जिक्र ना किया. Some say he returned to the desert years later, not for treasure, but to find the ruins again. कुछ लोग कहते हैं कि वो बरसों बाद सहरा में वापस गया, खजाने के लिए नहीं, बल्कि दोबारा इन खंडरात को तलाश करने. They say the sands had buried them once more. कहा जाता है कि रीत ने उन्हें एक बार फिर दफन कर दिया था. अगर आप वाकई सीखना चाहते हैं, तो अब कहानी दोबारा सुनें, इस बार सिर्फ अंग्रेजी में. देखें आप कितना समझते हैं. मगर इससे पहले वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. In the endless deserts beyond the city of Mariba, where golden dunes rise and fall like frozen waves, there stood an ancient ruin buried in time and whispers. Few dared to travel there, for it was said the place was cursed, a remnant of an age when jinn walked freely among men. But one night, beneath a waning crescent moon, a boy named Yamin ventured into the dunes with a tattered map and a broken compass. He wasn't a thief, nor a treasure hunter. He was a healer's apprentice, searching for the Ashen Pearl, a mythical stone said to cure any disease. His mother lay dying,
and no potion or prayer had saved her. Yamin's journey had been perilous. Scorpions stung him, mirage led him astray, sandstorms battered his frail body, but his resolve was ironclad. On the seventh night, the desert opened to reveal the ruins, obsidian pillars scorched by ancient fire, and at the heart, a mausoleum carved into the rock like a sleeping beast. Inside, the air was thick with dust and secrets. Strange symbols pulsed faintly on the walls, alive with a forgotten language. As Yamin stepped inside, the door closed behind him with a resounding thud. Shadows coiled. A deep voice echoed from the darkness. "Why have you disturbed my slumber?" A towering jinn appeared, his form fading between fire and smoke. His eyes burned not with fury, but with weariness. His name was Zar, and he had been bound for 1,000 years, cursed to sleep until someone came seeking the Ashen Pearl. Yamin, trembling, explained his quest. Zar listened and then laughed, a sound like thunder rolling through the underworld. "So it was not greed that woke me, but love. Very well, boy. The pearl lies in the Chamber of Whispers, but you must answer my riddles. Fail, and the desert will reclaim you." The chamber lit with blue flame, and the first riddle came. "I speak without a mouth and hear without ears. I have no body, but I come alive with wind. What am I?" Yamin whispered, "An echo." Zar nodded, and a stone door creaked open. The second riddle followed. "I can build castles or crumble them. I can blind a man or reveal his path. I am soft as silk and fierce as time. What am I?" Yamin paused, then smiled. "Sand." Another door opened, but before the third riddle could be spoken, Zar faltered. The flames around him flickered. He groaned, collapsing to one knee. "I am dying, boy," he gasped. "The curse was never meant to end, only to rot me slowly." Yamin, without thinking, rushed to him and placed his hands on the jinn's chest. "Let me help." A pulse of light surged through him. The ancient magic within Zar responded. In that moment, Yamin's compassion undid part of the curse. The jinn's form steadied, but he remained bound. "You have a healer's soul," Zar murmured. "That is rarer than wisdom." Moved by Yamin's purity, the jinn offered the final riddle not as a test, but as a gift. "I am the treasure that grows when shared, the light that survives the darkest tomb. What am I?" Yamin answered without hesitation. "Hope." The chamber opened. There, on a pedestal carved from moonstone, lay the Ashen Pearl, glowing like a quiet star. Yamin took it, bowing deeply to the jinn. Zar smiled, his flames now calm. "Take it, healer, and know this, true power is not in what you wield, but what you are willing to give." When Yamin returned to Maraba, the pearl saved his mother. Word spread of his journey, but he never spoke of the jinn or the riddles. Some say he returned to the desert years later, not for treasure, but to find the ruins again. They say the sands had buried them once more. आज की कहानी से आपने कौन सा इंग्लिश लफ्ज़ सीखा? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। हमारी वीडियो के आखिर तक साथ रहने का बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।